हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले हमारा हमारा जो मैराथन कंपटीशन हुआ करता था, अभी हमने उसका नाम चेंज किया है। उसका नाम है ऑनलाइन शिक्षण। तो हम देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण में साइंस टॉपिक, क्लास 7 के लिए आज हम टॉपिक देखने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इस टॉपिक में। पहले, व्हाट इज अ सेल? Cell is the smallest unit of life. They are the structural, functional, and biological units of life. The discovery of cells was first made by Robert Hooke. While examining a section of a core under the microscope, he observed small compartment-like structures and named them cells. However, Hooke observed dead cells under the microscope as cork is made up of dead cells. Cells exhibit different types of properties, like it is the smallest living unit of life. It is so small that it is not visible to the naked eye. The shape of the cell varies in different organisms and within an organism. Size of cells also differs. All living cells exhibit certain basic characteristics like respiration, growth, metabolism, etc. Cells originate from a pre-existing cell. A mother cell divides and produces daughter cells. Hence, cells exhibit cell division. Different organelles in a cell. The cells may contain the following cell organelles depending upon whether it is a plant or animal cell. Cell membrane, cell wall, vacuole, plastids, endoplasmic, reticulum, chloroplast, Golgi apparatus, ribosomes, mitochondria, nucleus, lysosomes, centrosomes, and inclusion bodies. What are microorganisms? Living microorganisms which are not visible to the naked eye are known as microorganisms. They are living organisms that can be seen only with a microscope or a magnifying glass. Microorganisms were observed for the first time by Anton von Leeuwenhoek in 1674 using a microscope of his own. Different types of microorganisms. Microorganisms can be divided into 5 major groups like bacteria. Bacteria are the most primitive and diverse unicellular organisms found in living world. They are prokaryotic in nature as their genetic material, that is DNA, is not enclosed within a nuclear membrane. Because of their unique biochemical pathways and properties, they are of high economic importance of the human beings. Fungi. Fungi is a group of eukaryotic, unicellular as well as multicellular, non-photosynthetic organisms that includes mushrooms, molds and yeasts. These organisms have a rigid cell wall made up of chitin and are found in diverse shapes and sizes. Algae. Algae are a diverse group of aquatic organisms that have the ability to conduct photosynthesis. Protozoa. Protozoa are a group of unicellular or microorganisms which are non-photosynthetic in nature. Many protozoa cause disease in animals and humans. Viruses. Viruses are ultra-microscopic and non-cellular organisms. They have simple structure having genetic material coated by protein coat. They are obligate parasites and highly pathogenic. Plant cell. Cell membrane. A cell is composed of a cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus enclosed in the cell membrane together constitute the plasma membrane. It checks the transport of substances in the cell. दोस्तों, यहाँ पे है ऑनलाइन शिक्षण मतलब साइंस मैराथन कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है।
तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक पेपर के ऊपर लिखना है और वो पेपर का फोटो निकाल के हमें इस व्हाट्सएप पे भेज देना है। दोस्तों ये कंपटीशन का आपको सभी के सभी मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस तीनों जो सब्जेक्ट है इनमें आपके स्टैंडर्ड के लिए पूछे जाने वाले हर एक सवाल का आपको जवाब देना है और हमें व्हाट्सएप करके यहाँ पे भेज देना है। दोस्तों याद रखना, आप आपको सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने कंपलसरी है, तभी आपको जो है वो प्राइजेस मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों याद रखना, आपके जो भी दोस्त हैं उन सभी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी इस कंपटीशन का एक हिस्सा बने। Cell wall. In plants, an extra protective covering known as cellulose is present. It is called cell wall and protects the plant cell from environment variations. Cytoplasm. It is a jelly-like substance present between the cell membrane and nucleus. It contains various cell organelles such as mitochondria and Golgi body. Nucleus. It is a dense spherical body located at the center of the cell. It is surrounded by a porous nuclear membrane. It contains a spherical body called nucleus and thread-like structures called chromosomes. Chromosomes are the structures that carry genes and play an important role in inheritance. The entire living substance in a cell is known as protoplast. दोस्तों यहाँ पे डायग्राम दी गई है। Vacuoles. Vacuoles are fluid-filled membrane-bound structures in the cell. In plant cells, a single large vacuole is present. In animal cells, numerous small vacuoles are present. Plastids. They are present only in plant cells. Chloroplast is a plastid containing the green pigment called chlorophyll, which is required for photosynthesis. Mitochondria. They are involved in cellular respiration and hence are called powerhouses of the cell. Animal cell. All the cell organelles in plant and animal cells are same except that animal cells have plasma membrane in place of cell wall and it does not contain chloroplasts. This is the diagram for animal cells. दोस्तों यहाँ पे और एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है स्केच एंड डिस्क्राइब अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो दोस्तों अभी हमने जो देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, तो उसका आपको स्केच निकाल के उसके बारे में आपको जो नोट है वो आपको देनी है। दोस्तों याद रखना, इस सवाल का जवाब आपको एक पेपर पे लिख के उसका फोटो निकाल के इस व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। दोस्तों और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। Uses and harmful effects of microorganism. Microorganisms have found wide-scale applications in various industries. Some of their applications are use of microorganisms in food industry. Lactobacillus bacterium promotes the conversion of milk into curd. Yeast is used in preparation of breads, pastries, and cakes. Use of microorganisms in vaccine production. Protection of the body from the attack of various diseases causing microorganisms through vaccines is known as vaccination. Vaccine includes dead or weakened microbes that trigger the production of antibodies in the body. Use of microorganism in increasing soil fertility. Sorry. Blue-green algae and rhizobium are called biological nitrogen fixers. They fix atmospheric free nitrogen to enhance soil fertility. These are just few examples which highlight the commercial importance of these microorganisms. However, they are not always beneficial, can lead to various kinds of damage. This damage can be in terms of health of humans and animals, crop production, etc. There are various kinds of microorganisms which are known to cause disease in humans and animals. This is a human diseases and pathogen. Tuberculosis, bacteria, measles virus, chickenpox virus,
polio virus, cholera bacteria, typhoid bacteria. Similarly, there are certain species of microorganisms which cause disease in plants and affect the crop productivity. This is a plant disease and this is a pathogen. Citrus canker, bacteria, rust of wheat, fungi, yellow vein mosaic of bhindi, okra, virus. Uses of microscope. The simple microscope is generally considered to be the first microscope which was created by Antony van Leeuwenhoek in the 17th century. It was essentially a type of which was used by Leeuwenhoek to gain information about biological specimens, including the difference in shapes between red blood cells. Today, simple microscopes are not used often because the introduction of compound microscopes which have better resolution and magnifier power. Compound microscope offers better magnification than a simple microscope. These devices provide a magnification of 1000 times. It can be used to observe microorganisms like bacteria, fungi, protozoa, etc. It can be used in their detailed study, for example, studying their structures. दोस्तों यहाँ पे है ऑनलाइन शिक्षण मतलब साइंस मैराथन कंपटीशन का एक क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक पेपर पे लिखना है, उसका फोटो निकाल के हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। दोस्तों हमारे हर एक स्लाइड पे इसका नंबर यहाँ पे मौजूद है, आप वो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों आप आपके फ्रेंड को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी हमारे इस कंपटीशन का एक हिस्सा बने। तो दोस्तों ये था जो मैंने अभी 7th स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। अगर आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।